माय डियर व्यूअर्स, मैं CAR के शुक्ला आज आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 48। तो जीरो कूपन बॉन्ड इट इज ए बॉन्ड issued by a infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or a scheduled bank on or after June 1st, 2005. From the assessment year 22-23, it also includes the bond issued by इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। तो 4 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स इंटरेस्ट or dividend will not be paid till the date of maturity. Only amount would be paid at the time of maturity or redemption. Now, what is the tax treatment in the hands of investor? So, following is the treatment of tax in the hands of investor. My dear audience, maturity or redemption of zero coupon bonds will amount to transfer under section 2 subsection 47. Means maturity or redemption value will be treated as consideration or sale consideration. Now we will subtract the maturity. Now we will subtract from the maturity value the present value of coupon bond. It means redemption value minus present value of zero coupon bond is equal to capital gain. If period of holding of bond is 12 months or more, if period of holding of bond is 12 months or less, it will be short-term capital gain taxable under section 111A at the rate of 15%. If period of holding is more than 12 months, it will amount to long-term capital gain, means maturity value minus present value of zero coupon bond is equal to long-term capital gain. Long-term capital gain will be taxable under section 112 at the rate of 10%. Indexation benefit will not be available. मीन्स अब हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड 4 तरीके के हो सकते हैं। उसमें एक हो सकता है इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, दूसरा हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, तीसरा हो सकता है इशूड बाय शेड्यूल बैंक, फोर्थ नंबर जो हो सकता है इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग of such bond is 12 months or less, it is short term. Any gain arising on maturity or redemption of such bond will be short term capital gain or loss. If period of holding is more than 12 months, it will amount to long term capital gain. The difference between redemption value and present value of cost of bond will be the capital gain. It means if maturity value is rupees 10 lakh and present value of cost of acquisition is rupees 5 lakh, the difference will be
long-term capital gain which would be taxable at the rate of 10%. अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हम लोग इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। मीन्स बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए इंडेक्सेशन नहीं किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल gain. If there is long term capital gain, simple we will calculate redemption value minus present value of bond is equal to capital gain. So this is section 2 subsection 48 which is called zero coupon bond. थैंक यू माय डियर ऑडियंस। आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।